Okay. So in the last class, we have focused on the design of the cylinder, and we have solved two numericals in the last classes on the design of the cylinder. Now we are moving to the design of the piston. Piston is also very important component of the IC engine, internal combustion engine. So first we will see the functions of the piston. So piston is the function of the piston is to receive the impulse from the expanding gases. And gases are expanding inside the cylinder. So there is a force generated, some impact force is there. So that impact force is received by the piston head of the piston, and transmit that energy through the connecting rod to the crankshaft. So this is the function of the piston. Trunk type piston are more common in the industrial applications. So trunk type piston means the piston is open at one end. The pistons which are open at one end are known as trunk type pistons. Next, what are the different parts of the piston? So there are so many parts of the piston. Number one is the piston head or crown. It is under the cylinder gas pressure. It withstands the cylinder gas pressure. It is also known as crown, and it is the piston head. So about the piston head, let I am going to the some whiteboard शेयर करके मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ. So let this is a cylinder, है ना. Cylinder के अंदर there is a piston. So this is the clearance between the cylinder and piston. So this portion is the clearance between the cylinder. This is the cylinder wall, or it is the cylinder liner, and this is the piston wall. So there is a gap between the cylinder and piston. Now, let this is the cylinder, and let this is the piston. So gases are burning over here. Here the gases are burning. So pressure is generated. So this is the piston head. This is the piston head. So this pressure is withstands by the piston head. So let the thickness of the piston head is T. The thickness of the piston head is TPH. TPH, P for piston, H for head. So let this is the thickness of the piston head. So what will be the criteria for the thickness of the piston head? So from design point of view, there are two criteria. Number one is the strength criteria. Number one is the strength criteria. So we will decide the material of the piston in such a way that its strength is very good. It have a good strength. It is having good strength. And we will also decide the material on many parameters. So some parameters I am listing. Let parameters for the material selection of the piston. I can list first parameter. It should having good strength. So strength should be high or good. Number two, it is having lightweight. The weight of the piston should be light. It should having light weight. So as far as concerned, when the speed of the piston is less than 6 meters per second, when the speed of the piston is less than 6 meters per second, so inertia forces are inertia forces are less. In that case, inertia forces are less. So when the speed is more than 6 meters per second, so inertia forces are high. So inertia forces are high. So to minimize the inertia forces, the material of the piston should be chosen in such a way that its weight is minimum. So when the speed is more than 6 meters per second, inertia forces are high. And to minimize the inertia forces, we select the piston material as aluminum alloy. Because aluminum alloy is having low density. Low density means low weight,
and low weight means low inertia forces. It will minimize the inertia force. It will minimize inertia forces at high speed. Okay, so for the when the piston velocity is more than 6 meters per second, aluminum alloy pistons are always preferred. And when the velocity is less than 6 meters per second, we can use the cast iron piston. Okay, we can compare between the cast iron piston and the aluminum alloy piston. So from strength point of view, the strength of the cast iron is good. Strength of the cast iron is good, but strength of the aluminum alloy, it is having reduction in the strength on high temperature. As the temperature increases, the strength of the aluminum alloy decreases. So this is a drawback. So strength के point of view से cast iron piston are more good as compared to aluminum. Because inside gases are burning, so temperature is increasing, and on temperature increase there is a reduction in the strength of the aluminum alloy. So from strength point of view, we can say cast iron pistons are more good. Number 2, second property, strength should be good. It should have lightweight, though property we have discussed. And one more property, thermal conductivity, K. So K is the thermal conductivity. So this is the piston head. This is the piston head. So this is the center of the piston. So let the temperature at the center is Tc, and temperature at the boundary wall, let To. So there is a difference in the temperature Tc minus To. Difference in the temperature Tc minus To. So when gases are burning in the cylinder, the heat is generated. That heat, the part of that heat, heat is generated in the cylinder. So part of that heat is accepted by the piston head, and that heat to be removed to the atmosphere through the cylinder wall. So heat is generated, part of heat is accepted by the piston head, and that heat to be dissipated to the atmosphere through the cylinder liner or the cylinder wall. So for this heat dissipation, this is also the criteria for the piston head thickness. So there are two criteria for calculating the piston head thickness. One is the strength criteria and one is the heat dissipation criteria. So from heat dissipation criteria, how much heat is removed, how much heat is dissipated to the atmosphere depends on the thickness of the piston. So piston head thickness is also calculated as per the criteria of heat dissipation. And heat dissipation is dependent on the difference of the temperature, center of the temperature at the center of the piston, and temperature of the outer edge of the piston. So thermal conductivity here plays very important role in the heat dissipation. When the thermal conductivity of the material is high, so it will be able to dissipate more heat in less time to the atmosphere. So from this point of view, aluminum pistons are more better as compared to cast iron piston, because thermal conductivity of the aluminum is approximately thrice to the as compared to cast iron. Okay, so we have discussed so many properties. First property we have discussed, the strength should be good. Then we have discussed the lightweight. The piston should be of lightweight. Then we have discussed it have high thermal conductivity. And fourth point is it is having low coefficient of thermal expansion, alpha. So alpha is the coefficient of thermal expansion. So when high heat is generated, so the material which is having low thermal expansion will be more good. If it is having high thermal expansion, then the thermal stresses will be high. So we will prefer a material which is having low coefficient of thermal expansion. For this property, the cast iron pistons are more good because coefficient of thermal expansion is less for the cast iron as compared to
aluminum. So there are so many criteria: strength, lightweight, high thermal conductivity, and low coefficient of thermal expansion. And one more property, it should be wear resistant at high temperature. And it should be wear resistant at high temperature, and it should be heat resistant also. It should be heat resistant also. It can work satisfactorily at higher temperature. So piston head thickness basically depends on the two criteria. One is the strength criteria, and one is the heat dissipation criteria. In heat dissipation criteria, thermal conductivity plays very important role, and in strength criteria, the material yield property plays important role. So I am again moving to the file. So piston head, and below piston head there is a piston barrel. Piston rings are also there. So piston rings are also there. So piston rings can also be explained with the I am again taking the whiteboard for explaining the piston rings. So this is the piston head. Then below there are rings. The ring number 1. This is ring number 2, ring number 3, and so on, or ring number 4, and so on. So these are the rings, है ना? These are the piston rings. This is this one, this one, this one. These are the piston rings. So piston rings are further categorized into two parts. Piston rings. So one is pressure rings, one is pressure rings, and one is oil rings, or you can say oil control rings. So ring number 1, ring number 2, ring number 3, there are 3 rings. The number of the rings also differs in different IC engines from 3 to 7, depends on it is a design requirement. So the number of the piston rings may be 3 or maybe 4, 5, 6, 7. It may be up to 10 भी हो सकता है कभी-कभी. So the function of the piston ring is, so rings are classified in two categories. Let number 1 and number 2 are the pressure rings. These are the pressure rings, and third one is the oil control rings. So the function of the rings is to seal the piston. So let gases are burning over here. Gases are burning over here. So these gas, and there is this is the surface of the piston, and this is the surface of the cylinder. This is the surface of the cylinder. This green boundary is the surface of the cylinder. So there is a gap between the piston surface and the liner surface. So in this gap, these gases can flow and go from combustion chamber. The gases can pass to the crankcase. The gases can pass to the crankcase. So what we are doing, we are making a group for the rings. So one ring is fitted over here, second ring is fitted over here, third ring is fitted over here. So these rings occupies the space, that clearance, minimize that clearance and occupies that space. So these gases cannot pass to the crankcase. The function of the pressure ring is to not to pass the gases from the combustion chamber to the crankcase. And the function of the oil rings, the below ring is oil rings. So the function of the oil ring is a difference. There is a lubricating oil coming over here, and this lubricating oil, let the lubricating oil coming from the bottom, and this lubricating oil does not pass to the combustion chamber. It is a reverse process. तो प्रेशर रिंग्स का काम क्या है? कंबशन चैम्बर से गैसेस को क्रैंककेस में जाने से रोकना. और ऑयल रिंग्स का काम क्या है? लुब्रिकेटिंग ऑयल को क्रैंककेस की तरफ से कंबशन चैम्बर में जाने से रोकना. ठीक है, सिलेंडर लाइनर और पिस्टन के बीच के गैप को ये मिनिमाइज करती हैं. इनकी वैल्यू 3 to 7 या मैक्सिमम 10 तक हो सकती है. ठीक है. सो नाउ आई एम, अब इसमें देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये तो मान लीजिए हेड है,
तो हेड की थिकनेस को छोड़कर बाकी जो पोर्शन है वो कहलाता है पिस्टन बैरल. So this portion, this length is piston barrel. Total length is length of the piston. This is piston barrel, and the portion below the rings is known as skirt of the piston. So piston is having many parts. है ना? Piston head very important. Then piston barrel, and after this is the length of the piston. Piston barrel means the leaving the head. Head को छोड़कर जो length है, that is the piston barrel. और रिंग के नीचे का जो पोर्शन है दैट इज स्कर्ट. सो पिस्टन स्कर्ट, पिस्टन बैरल, पिस्टन हेड, पिस्टन रिंग्स, एंड रिंग्स आर टू टाइप्स, प्रेशर रिंग्स एंड ऑयल रिंग्स, एंड देयर इज ए पिस्टन पिन आल्सो, है ना, देयर इज ए पिस्टन पिन आल्सो. तो यदि मैं पिस्टन के पार्ट्स को एक जगह गैदर करूं तो वी आर हैविंग द पिस्टन हेड, वी आर हैविंग द पिस्टन बैरल, वी आर हैविंग द पिस्टन स्कर्ट, we are having the piston rings, and 1 2 3 4, and we are having the piston pin. Piston pin is also known as wrist pin. piston pin को हम wrist pin भी बोलते हैं, और इसका एक नाम और है गजन पिन. This is also known as गजन पिन. कई नामों से जाना जाता है piston pin. Piston pin क्या करती है? It connects the piston to the connecting rod. पिस्टन पिन का काम है कि पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट करना, सो दैट द एनर्जी पावर कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पिस्टन टू द क्रैंक. सो दीज आर सम पार्ट्स ऑफ द पिस्टन, है ना. इसके अलावा भी कुछ 2-3 पार्ट होते हैं. तो अभी हम वापस फाइल पर चलते हैं. हमें एक न्यूमेरिकल भी करना है आज, सो आई एम जस्ट मूविंग टू देयर. टाइम हमारे पास शुरू में 10 मिनट वेस्ट हो गया हमारा. थोड़ा सा मैं न्यूमेरिकल की तरफ भागूंगा अभी. सो पिस्टन हेड है, पिस्टन बैरल है, पिस्टन रिंग्स हैं, पिस्टन स्कर्ट है ना, रीइंफोर्सिंग रिब्स हैं. रिब सपोर्ट के लिए होती हैं, हेड को सपोर्ट करने के लिए होती हैं. पिस्टन पिन होती है. ये पार्ट्स के बारे में मेरा डिस्कशन हो गया. इसके बाद डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द पिस्टन मटेरियल अभी मैं बता चुका हूँ. पिस्टन हाई स्ट्रेंथ होनी चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, गुड थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए, लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन होना चाहिए, यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपांशन होना चाहिए, है ना. यूनिफॉर्म होना चाहिए. ऐसा नहीं कि किसी जगह पे तो लेंथ ज्यादा बढ़ रही है, पिस्टन की लेंथ के कुछ पार्ट में तो अनइवन इंक्रीज हो रहा है और कहीं पर बिल्कुल इंक्रीज नहीं हो रहा है. यदि एक्सपेंशन हो भी रहा है तो वो यूनिफॉर्म एक्सपेंशन हो, है ना. तो यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. हाई वियर रेजिस्टेंट होना चाहिए हाई टेम्परेचर पे. लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी होना चाहिए, क्योंकि पिस्टन सरफेस स्लाइड करती है सिलेंडर वॉल्व में, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड by having low coefficient of friction. So piston material should be chosen in such a way so that the friction between the cylinder liner and the piston outer ferry should be minimum. Low coefficient of friction, ये तो हमने bearing में भी पढ़ा है. Sliding contact bearings में low coefficient of friction होना चाहिए. तो यहाँ पर cylinder is acting as a bearing for the piston. So दोनों के material के बीच में friction should be minimum, and good bearing properties. Now material of the piston, these are some material listed. Cast iron piston, when the velocity is less than 6 meter per second. Alloy cast iron, है ना. Alloy cast steel, aluminum alloys, velocity more than 6 meter per second. And alloy forged steel. So alloy cast steel and alloy forged steel, इन दोनों में फर्क ये है कि alloy forged steel का जो स्ट्रेंथ है वो कास्ट स्टील के रेस्पेक्ट में करीब करीब 40% greater होती है. The strength of the alloy forged steel is 40% more than the alloy cast steel. अब सीधे डिजाइन पे आ जाते हैं. तो डिजाइन में हम आज डिजाइन करें, हम सारे पार्ट्स को डिजाइन करेंगे. We will design all the parts, है ना. We will design all the parts. Parts means we will design the piston head, we will design piston barrel, then rings, then skirt, है ना. We will design all the things. We will also design the piston pin. But in today's class we are going to design only the piston head. So piston head, the design of the piston head is based on the two criteria. Design of the piston head is based on two criteria. First criteria is strength criteria and second criteria is heat dissipation criteria. So strength criteria, as per the strength criteria, thickness of the piston head is given by 0.433 D root P max upon sigma T, in which sigma T is the allowable stress for the piston material,
and if we choose the piston material, then allowable value can be found. So thickness, second criteria is thickness based on heat dissipation. And for heat dissipation, thermal conductivity property, so many parameters you are seeing, like here HCV. HCV means it is higher calorific value, and a higher calorific value of the fuel, and fuel is petrol or diesel. So petrol and diesel, the calorific value is generally 44,000, 40 to 45,000 के बीच में कोई भी वैल्यू हम अज्यूम कर सकते हैं कैलोरिफिक वैल्यू के लिए. So the general calorific value for the petrol and diesel is 44,000 kilojoules per kg. 1 किलोग्राम फ्यूल को बर्न करने से जो एनर्जी मिलेगी तो वो एनर्जी 44,000 किलोजूल है. BP is brake power. You already know VBM LAN by 60,000, and a brake power and indicated power we have already discussed. And this one is BSFC, means brake specific fuel consumption. So this is the fuel consumption, and it is given in kg per kilowatt second. It is given in kg per kilowatt second. Please check. Hello, sir. नमस्कार. हाँ सर, कल बात हुई है मेरी, 5-6 लोगों ने यस बोला है, तो अभी आने चाहिए मेरे पास 1-8 घंटे में. हाँ जी 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 जी. हाँ, दे दिया है सर इंस्ट्रक्शन मैंने, मतलब बता दिया है कि इनिशियल 15 सेकंड्स में तो इंट्रोडक्शन देना है, बाद में वो बताना है, और अपना पीछे का बैकग्राउंड और वॉइस जो है वो फाइन होनी चाहिए, ये मैंने बताया. अच्छा, हाँ ले लूंगा सर, मैं ना ले लूंगा. ठीक है, मैं ले लूंगा. अभी मेरी क्लास ही चल रही है सर इस वक्त. वो ठीक है, 1 से 2 मैं ले लूंगा फिर आप. हाँ, रूम नहीं तो मैं उसमें देख लूंगा, जो शेड्यूल आता है ना 17 अप्रैल का, उसमें मुझे क्लासरूम मिल जाएगा आपके नाम से. हाँ ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं सर, मैं ले लूंगा, आप कर लीजिए मीटिंग, कोई इशू नहीं. ठीक है सर. तो BP is the brake power, HCV is higher calorific value, BSFC is brake specific fuel consumption. So BSFC is mentioned here, it is brake specific fuel consumption. So its unit is kg per kilowatt second, है ना, kg, fuel consumption in kilograms per kilowatt per second, है ना, per kilowatt kg per kilowatt second. तो अभी न्यूमेरिकल करेंगे, then it will be more clear. And K is the thermal conductivity, and delta T is the temperature difference. Delta T is the temperature difference between the center of the piston and the outer of the piston, that is TC minus TO. अभी मैंने white board पे भी explain किया है. So delta T is TC minus TO, and अब बचा केवल pi is a constant, 22/7, and X is the factor. Heat is generated in the cylinder, and part of the heat is accepted, part of the heat is taken by the piston head. So we generally assume that 5% heat is taken by the piston head. So X is fraction of the part of the heat absorbed by the piston head, and it is generally assumed as 0.05. Now, if it is not mentioned in the question that how much heat is the piston head is taking, then for design purpose we can assume that 5% heat is taken by the piston head. So it is an assumption. So BSFC clear, brake specific fuel consumption, HCV clear, delta T clear. Now I am doing a problem. तो आज एक प्रॉब्लम करेंगे और बस प्रॉब्लम करके ही आज की क्लास को एंड कर देंगे. So let this is a numerical. The problem is in front of you. A cast iron piston. So material is given, cast iron. So from material is given means allowable value we can take from the data book. And allowable value sigma T can be found from the data book. So cast iron piston, it is to be used for a single acting 4-stroke engine. So it is a 4-stroke engine. So for the 4-stroke engine,
I have told you that number of the strokes equal to RPM divided by 2 in the last. For the two-stroke engine, number of the stroke N equal to capital N, and but for the four-stroke engine, small n equal to capital N divided by 2. ठीक है, cylinder bore is given, stroke is given, fuel consumption is given, speed is given. So speed is for 2200 RPM. So what will be the number of strokes? Because it is a four-stroke engine, so number of strokes will be 2200 divided by 2 means 1100 stroke. Number of the stroke आधे हो जाएंगे RPM का, because it is a four-stroke engine. Very important. यदि ये two-stroke engine होता तो number of the stroke 2200 ही रहते. ठीक है, मैक्सिमम गैस प्रेशर 5 MPa is given, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर 0.65 given. So this is the given data. Now find the suitable thickness of the piston head. है ना, piston head हमसे निकलवा रहा है क्वेश्चन. Thermal conductivity of the cast iron is given 46 joule per second meter degree Celsius. This is the unit of the thermal conductivity, watt per meter degree Celsius, and what is written over here joules per second. तो बात एक ही है, joules per second is watt, watt per meter degree Celsius, है ना. And allowable temperature difference is 222 degree Celsius. Means this is the temperature difference. Means this is Tc minus Tu. Temperature at the center of the piston and temperature at the edge of the piston. The difference in the temperature is 222 degrees Celsius. So many data is given. You have to calculate the piston head thickness. And we already know that piston head thickness is calculated by two criteria. First is strength criteria and second one is heat dissipation criteria. And we will get two answers, one by strength criteria, one by heat dissipation criteria, and we will get maximum of two. For example, मान लीजिए strength criteria से कोई piston की thickness 10 mm आ रही है strength criteria से, और heat dissipation criteria से मान लीजिए 14 mm आ रही है, तो हम उनमें से जो हायर वैल्यू है उसको फाइनल थिकनेस मान लेंगे. दोनों क्राइटेरिया से जो वैल्यूज आएंगी उनमें जो हायर होगी वो फाइनल हेड थिकनेस मानी जाएगी. ठीक है, जो भी हायर होगी, हीट डिसिपेशन वाली हायर होगी तो वो एक्सेप्ट की जाएगी, स्ट्रेंथ वाली हायर होगी तो स्ट्रेंथ वाली एक्सेप्ट की जाएगी. सो लेट स्टार्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो BSFC इज गिवन 0.227 kg per kilowatt hour. है ना, hour. So we have to calculate in the for the unit compatibility, we have to convert it into kg per kilowatt second. We have to convert it into second. So we will divide this value by 3600. 1 hour is 3600. So we will divide this value by 3600. So the unit will be kg per kilowatt second. Very important. अब देखिए नंबर ऑफ स्ट्रोक्स 2200/2, क्योंकि 4-स्ट्रोक इंजन है तो 1100 साइकिल्स हो गए या 1100 स्ट्रोक हो गए 1 मिनट में. थर्मल कंडक्टिविटी 46 दे रखी है, डेल्टा टी 222 दे रखा है. थिकनेस ऑफ द पिस्टन बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ क्राइटेरिया. तो ये स्ट्रेंथ क्राइटेरिया का फॉर्मूला है 0.433 d रूट P max डिवाइड बाय सिग्मा t. 0.433 d is given 100. D means bore diameter. Bore diameter is given 100. It is mentioned in the question. So bore diameter is 100. P max is 5. It is also given in question. Maximum gas pressure is also given. Maximum gas pressure 5 megapascal. And 37.5 that we have assumed because the material is cast iron piston, and for cast iron piston we have assumed allowable value as 37.5. ये आप जो भी चाहें 37.5, 40, 42 कुछ भी मान के एग्जाम में आप सॉल्व कर सकते हैं. थोड़ा सा डाटा बुक देख लीजिए, वहां पे जो भी वैल्यू हो उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करिए, देन दिस विल बी द अलाउएबल वैल्यू, है ना. दिस इज अजम्पशन. सो वी आर गेटिंग द आंसर एज 15.81 मिलीमीटर. सो थिकनेस ऑफ द पिस्टन हेड इज 15.81 मिलीमीटर. राउंड ऑफ ओके, सो 16 मिलीमीटर आंसर हो गया. So as per the strength criteria, the thickness should be of 16 millimeter thickness. The second criteria is heat dissipation criteria. So thickness of the piston head based on the heat dissipation is given by TPH. PH means piston head. X is a factor. The value of X is 0.05. BSFC is 0.227 kg per kilowatt hour divided by 3600. So it is kg per kilowatt second. Unit बहुत important है. तो इसको सॉल्व करके हो गया 6.30 into 10⁻⁵ kg per kilowatt second.
Now we need brake power also. So brake power is PVM LAN by 60,000. So PVM is 0.65. Brake mean effective pressure is given in question. Brake mean effective pressure is given. It is 0.65. So just we have used it here. Brake mean effective pressure. And then L is number of strokes. So number of strokes is 1100 and 0.65 into 120. It is the length of the stroke is given in question. Length of the stroke is also given. Length of the stroke is given in question. Initially देखिए stroke length, it is given 120 millimeter. So L is the stroke length. So we have used here 0.65 into 120 into pi by 4. D is 100 and 1100 is N, number of strokes. L is the length of stroke, N is the number of stroke. Number of stroke is 1100, length of the stroke is 120. So after solving, we get this much of watt converted to kilowatt and divide by 1000. Now HCV, higher calorific value. So higher calorific value is not mentioned in the question, just so we have assumed it. We can assume between 40 to 44 or 45. So it is 42,000 kilojoules per kg has been assumed. And when converted to joule, multiply by 1000. So it is 42,000 into 10 to the power 3 joules per kg. So HCV we are having, all the values the formula involves so many parameters. X is there, VSFC is there, HCV is there, BP is there, thermal conductivity is there, delta T is there. Now we are having all the values, just we put all the values. So this is X, and this is VSFC, and this is HCV, and this is brake power, BP. 4 pi, this is thermal conductivity 46, and this is the temperature difference delta T. And after solving it, we get this much of meter converted to this much of millimeter and rounded off to 12 millimeter. So as per the heat dissipation criteria, the thickness of the piston head is calculated 12 millimeter. By strength criteria, the answer is 16. By heat dissipation criteria, the answer is 12. We will go for the maximum of these two. The maximum value is 16. So we will find the strength criteria will be the deciding criteria, decision making criteria. So here the decision making criteria is strength criteria. So our thickness of the piston head is given by 16 millimeter. Larger of the two values we have taken. So 16 millimeter. And thickness of the piston barrel is kept same. PB means piston barrel. So thickness of the piston barrel is kept same, equal to the thickness of the piston head. So the thickness of the piston barrel is 16 millimeter here. Okay. Thickness of the piston barrel is 16 millimeter. So this numerical completed. Now if you have any query in this numerical or in the design of the piston, you can ask. आकाश उपाध्याय रेज हैंड. ओके आकाश अनम्यूट हो जाइए. आकाश आप स्वयं हो जाइए और बोलिए क्या कहना चाहते हैं. इसमें नंबर ऑफ स्ट्रोक डिवाइड किया था हमने, तो 4 था वो. अच्छा, नंबर ऑफ स्ट्रोक डिवाइड क्यों किया? ओके यस कल की क्लास में आप थे सर. कल डिस्कनेक्ट हो रही सर, आवाज नहीं आ रही थी सही से. हाँ वीडियो देख लीजिए आप. कोई बात नहीं, अभी दोबारा समझ लीजिए. मैंने कल की क्लास में एक्सप्लेन किया था कि क्यों आधा होता है. इसको जरा दोबारा से देख लीजिए, है ना. देखिए होता क्या है, ये हमारा सिलेंडर है, ये पिस्टन है, ये कनेक्टिंग रॉड है. इस तरह से सिचुएशन होती है. तो 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है? 2 स्ट्रोक इंजन में मान लीजिए इसकी आरपीएम n है, तो 2 स्ट्रोक इंजन में इसके एक रिवॉल्यूशन में ये एक फॉरवर्ड स्ट्रोक देता है आपको. पावर स्ट्रोक इसमें एक मिलता है, तो इसका एक रिवॉल्यूशन आपको एक स्ट्रोक मिलेगा, इसके 2 रिवॉल्यूशन आपको 2 स्ट्रोक मिलेंगे. तो इसके n रिवॉल्यूशन तो आपको कितने स्ट्रोक मिलेंगे? n, है ना. तो n इक्वल टू कैपिटल N होता है. हाँ, n इक्वल टू कैपिटल N होता है इन केस ऑफ 2 स्ट्रोक इंजन. करेक्ट है. 2 स्ट्रोक इंजन की पहचान होती है कि क्रैंक के एक रिवॉल्यूशन में एक पावर स्ट्रोक मिलती है. ठीक है. अब 4 स्ट्रोक की बात करें तो 4 स्ट्रोक में क्या होता है, क्रैंक के 2 रिवॉल्यूशन में 1 पावर स्ट्रोक मिलता है.
यस, इसके 2 रिवॉल्यूशन में 1 मिलेगा, इसके 4 रिवॉल्यूशन में 2 मिलेंगे, 6 में 3 मिलेंगे, आधे हो जाते हैं। तो इसके n स्ट्रोक होंगे तो इसके कितने होंगे, n/2 हो जाएंगे, आधे हो जाते हैं। सर तो इसलिए n इक्वल टू n/2 होता है इन केस ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन। तो हमारा एग्जाम्पल 4 स्ट्रोक का था और वो 2200 आरपीएम से घूम रहा था। 2200 आरपीएम हो रहा था तो उसके स्ट्रोक कितने हो जाएंगे, 2200 बटे 2, इसलिए हमने 1100 लिया है। सर आकाश हम क्लियर? इसमें सर आकाश क्लियर पावर है? स्ट्रोक देखते हैं ना इसमें हम। हाँ, क्या कह रहे हो, फिर से बोलिए। सर इसमें हमें हमें पावर स्ट्रोक देखना होता है ना सर। हाँ, पावर स्ट्रोक पावर देखना है तो इसके 2 रिवॉल्यूशन में हमको एक ही पावर स्ट्रोक मिलता है 4 स्ट्रोक में। हाँ, आपका 4 स्ट्रोक में ही होता है पावर स्ट्रोक। हाँ, इसलिए नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक आधे हो जाते हैं 4 स्ट्रोक में। ठीक है, इसलिए हमने 2200 की जगह आधे करके 1100 लिया है। ठीक है यदि सर। हमारा क्वेश्चन 2 स्ट्रोक का होता तो फिर हम 2200 का 2200 ही लेते, फिर हम आधा नहीं करते। ओके सर। एनी अदर Yes, क्वेश्चन प्लीज? सर ये फुल स्क्रीन में नहीं होता ये वीडियो अपना। वीडियो फुल स्क्रीन में, वहाँ ऑप्शन है आपके पास, आप जूम जूम आप अपने उसमें जाइए, वहाँ ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से जूम कर सकते हैं। सर जूम तो ठीक है सर, जब उसे फिट टू जूम ज्यादा बढ़िया रहता है, फिट टू जूम है ना, फिट टू जूम ज्यादा रहता है बढ़िया। यस सर यस सर। हाँ, जूम का ऑप्शन हर इंडिविजुअल के पास अलग से दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो चलिए क्लास हमारा 12 से ऊपर हो रहा है। कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, अदरवाइज क्लोज करते हैं क्लास को। नहीं सर। ओके, सर यहाँ थैंक पे यू। रिकॉर्डिंग भेजेंगे या फिर पीडीएफ भेजेंगे? दोनों भेजेंगे आपको, मैं तो आपको सब कुछ ओके भेज सर। रहा हूँ, मैंने अब ओके तक की सर। रिकॉर्डिंग आपको भेज दी है और अब तक की हाँ पीडीएफ हाँ आपको सर। भेज दी है। हाँ सर। सिलेंडर डिजाइन मैंने पीडीएफ आपको भेज दिया है, मिल गया होगा आपको। हाँ सर मिल गया था, यस कल सर करा था। मिल गया। और जैसे ही पिस्टन डिजाइन खत्म होगा आपको पिस्टन डिजाइन का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, और रिकॉर्डिंग तो आपको मिल ही जाएगी, रोज 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 की रोज रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी आपको। हाँ हाँ। ओके सर। ओके, थैंक यू वेरी थैंक थैंक यू यू सर, सर। थैंक यू सर, थैंक यू मच। सर। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। अब कोई क्लास है क्या? अभी मेरी तो नहीं है। अच्छा, आप लोग बात कर रहे हैं आपस में, हाँ। मेरी तो थैंक एमटेक यू में सर, क्लास है थैंक यू तो वो सर। मैं ले लूंगा। एक बार मैं चैट और देख लूं, तो चैट किए हैं लोगों ने, पुलिस, अच्छा ही बात हो गई। ठीक ठीक, ओके, सो आई एम एंडिंग द मीटिंग।